Hello students and welcome to the video class of the chapter probability. Last class we discussed the fundamental concept and some problems based on coins, and today we are going to discuss some problems related to the dice and the playing cards. So now question number 1, that is two dice are thrown simultaneously. Find two dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting an odd number on the first die and 4 on the second die. Question number 1. So answer is what? Solution is that is two dice are thrown. That implies cardinality of S is equal to 6 square, that is equal to 36. First bit, let A is equal to event or E1 is equal to event. E1 is equal to event that, what is the event? First, an odd number on the first die, an odd number on first and 4 on second. So E1 is equal to what? Odd number, that is what? 1, and second is 4, and second that the odd number is what? 3, the second is 4, odd number that is 5, and the second is 4. So cardinality of E1 mode is equal to what? 3. Cardinality of E1 mode equal to what? 3. So P of E1 is equal to what? E1 cardinality by S1, S cardinality, that is 3 by 36, that is 1 by 12. This is solution of bit 1. Now solution of bit 2. The sum is an odd number. Second, the second bit is what? The sum is an odd number. Now E2 equal to event, that the sum is what? Odd number. Sum is odd number. How the sum is odd number? One even number plus one odd number formed, the sum is what? Odd. So there are what? Odd numbers, that is 1, 3, 5, these are odd numbers, and even numbers what? 2, 4, 6, even numbers. So E2 equal to what? E2 will be, cardinality of E2 will be, select one odd number and select one what? Even number. So this will be what? 3C1. Out of 3 odd numbers we can select 1 similarly, and another is even. So 3C1. There are 3 even numbers. So out of 3, 1 even, you can select 1 even number. This is due to, this is sum of what? Sum is odd. Sum odd केतल हबो ना गोटे इवेन नंबर प्लस आ गोटे ऑड नंबर जदि ऐड करबी समडा ऑड आसीबो. तो ऑड नंबर डिजिट, ऑड नंबर केते अछि हम डायरे 1 3 5 अछि, सेथ्रु गोटे सिलेक्शन कली. इवेन नंबर कोन अछि? तीनटा अछि 2 4 6, सेथ्रु गोटे सिलेक्शन करी. तो 3C1 means what? 3, and 3C1 means what? 3. So this is equal to 9. This is equal to 9. Clear? Now what will be the, that is what? Into 2 here, because you can reverse the order. So this is 3 into 3 into 2, that is what? 18. Let's see what is, how it is 18. So E mode is equal to what? Now E mode equal to, sum is what? Even. Sum is even. Sum is odd.
So we can take that is E2 is equal to what? 1 2 2 1. Clear? Then 1 3 3 1. Then 1 5. Sorry, sum is odd. 1 2 2 1. Then 1 what? 1 4 4 1. Similarly 1 6 1 6 6 1 1 6 and 6 1 1 2 3 4 5 6 like this. 1 complete, then 2 complete, like this. What? 1 suppose this is 2 1 here, then 2 3 3 2, then 3 2 5 5 2. Okay, 2 5 5 2, again 5 2, 2 5 5 2, 3 2 3 2 2 5 5 2, then 3 3 what? 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3, and 3 6 6 3, again 4 here, 4 1, that is what? 1 4 present here. Now remaining was what? 3 4 4, and then 5 1 2 3, then 4 4 with what? 1 present here, 4 with 3 present here, 4 5 4 5 5 4, then 5 5 1 absent here, so 5 1 5 5 2 5 2, and 2 5 2 5, then 5 3 5 3 3 5 5 3 3 5. This is not even, not odd. Then 5 what? 5 5 4 5 5 4 5 2 2 5, then 6 6 1 1 6, then 6 3 3 6 6 5 5 6. Count this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Both are 4 3 3 4. Again what? 5 2 3 5 1 6 6 1 6 5. How many numbers? Count this. How many numbers? Count this. So it देखि दियो रिपीट हो जाउची हमर इडली 5 2 2 5 रिपीट हो जाइए, 6 1 1 6 रिपीट हो जाइए. तो कैंसिल कले केता होची आकु छाड़ दे, एजा कैंसिल कर दियो, एजा हबनी एटा हबनी एटा हबनी, रिपीट हो जाउची. तो काउंट कले केता होची एडी, एटा काट दियो ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is what? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 है ना. E2 मोडटा 18 हो गला. एमती देखिले आम सब लिखा डिफिकल्ट. तेणु ये कनसेप्ट एप्लाय कर ना. 3टा ऑड नंबर अच्छी कि 1 3 5 आउ केते ना, आउ 3टा इवेन नंबर अच्छी 2 4 6. तो 3टा इवेन नंबर रु मु 3टा इवेन नंबर गोटे इवेन सिलेक्शन कली, आउ 3टा इवेन नंबर रु गोटे इवेन नंबर, 3टा ऑड नंबर रु गोटे ऑड नंबर. कौन पे ना समटा इवेन ऑड हेबा दरकार. समटा ऑड केतल हबो ना गोटे इवेन डिजिट आ इवेन नंबर आ गोटे ऑड नंबर हबो. तो 3टा खाली टोटाल दुईटा मु सिलेक्शन करछि, से दुईटा को अरेंज कर परिबो. तो मन 1 2 नै तो 2 1 नेबे नहीं,
तेणु इंटू 2 है तो 18 हो कनसेप्ट गले आम एज पाइबा सो पी ऑफ E2 इज इक्वल टू व्हाट ये लिखापी पैसेज नथिबो आम एमती कर यूजिंग कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन करले इजी हो तो पी ऑफ के E2 इक्वल टू E2 कार्डिनलिटी बाय S that is 18 by 36 that is what 1 by 2 1 by 2 so solution of B is completed here. Now solution of C, a number greater than 3 a number greater than 3 and each on each die रे number greater than 3 थिबा दरकार ठीक अछि each die रे number 3 greater than 3 थिबा दरकार so solution of now question number C solution of question number 3 solution of question number 3 that is C A3 is the event A3 equal to the event solution of C A3 is the event that what greater than 3 a number greater than 3 on each die तो आम फास्ट नंबर कौन करिया पड़ो ना A3 कौन लिखि परिबा ना A3 इज इक्वल टू द नंबर ग्रेटर देन 3 द नंबर ग्रेटर देन 3 माने ऑन इच डे तो स्टार्ट हबो कौन 4 हे परिबो ठीक अछि आउ कौन हे परिबो ना 4 एंड व्हाट 4 5 हे परिबो 4 5 हे परिबो एंड 4 केते हे परिबो 6 हे परिबो देन 5 4 हे परिबो 5 4 हे परिबो 5 5 हे परिबो 5 6 हे परिबो देन कौन हे परिबो 6 4 हे परिबो 6 5 4 5 5 5 6 6 4 हे परिबो 6 5 हे परिबो 6 5 हे परिबो आउ कौन हे परिबो 6 6 हे परिबो द फास्ट चेक कर दियो ना दुईटा टाइप थ्रो कराई छी दुईटा टाइप रो नंबर जाक कौन हे पड़ो 3 टू अधिक हे परिबो तो 4 4 है फास्ट 3 टू अधिक सेकेंड 3 टू अधिक 4 5 3 टू अधिक 3 टू अधिक 4 6 3 टू अधिक 3 टू तो लिखिपर 5 4 दुईटा 3 टू अधिक 5 5 3 टू अधिक 5 6 3 टू अधिक ये 6 4 है 3 टू अधिक ये 6 5 है 3 टू अधिक 6 6 है तो E2 कार्डिनलिटी के देखी दियो E2 कार्डिनलिटी देखो ये नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन इच डे माने 3 टू अधिक बार दीटार तो E3 कार्डिनलिटी के देख लो E3 कार्डिनलिटी 9 आसला तो P ऑफ E3 के हम तो लिखिपर E3 कार्डिनलिटी डिवाइड बाय S कार्डिनलिटी 9 by 36 1 by 4 तो this is C is completed now the total at least 8 then another question that is fourth bit the total at least 8 minimum sum da 8 हेबा दरकार minimum sum 8 हबो लिखि परिया कॉम्प्लीमेंट लिखि परिया minimum 8 हबो sum da कोन at most 8 लिखिबा जा 1 minus कौन at most 9 करियो ताहा at most what दीटा प्रकार करि परिया तो solution of D that is E4 equal to event E4 equal the event the total is at least 8 माने कौन बोलछ मिनिमम समडा 8 हे 8 हे परे 9 हे परे
10 हो पारे 11 हो पारे मैक्सिमम 12 हो पारे कौन पाए 6 मैक्सिमम अच्छी तो ये 4टा लिखि दियो कौन होची ये 4टा लिखिले समडा 8 हवा केते कौन अच्छी देखि दियो समडा 8 ना मिनिमम समडा होची 8 ताडो बढ़िबो अप टू 12 पर्यंत जीवो तो 2,6 हो पारे 6,2 हो पारे एटा 8 वाला आउ 3,5 हो पारे आउ 5,3 पारे ये सब 8 वाला आउ 4,4 हो पारे 4,4 हो पारे ठीक अच्छे सम 8 पाई सम 9 रो कौन कौन आसी परिवो ए सम 8 पाई सम 9 रही परिवो कौन ना 3,6 हो परिवो 6,3 हो परिवो सम 9 वाला आउ कौन हो परिवो ना 4,5 हो परिवो 5,4 हो परिवो ये हला सम 9 वाला आउ कौन सम 9 हेबो आउ किछ हेबोनी सम 10 वाला कौन हो परिवो सम 10 वाला समडा 10 हेतिवो ना 4,6 हो परिवो 6,4 हो परिवो आउ 5,5 हो परिवो आउ सम 10 वाला कौन अच्छी देखि दियो दुटा नंबर डायरी दुटा नंबर ऐड कले 10 हबो आउ किछ नहीं सम 10 कथा हला सम 11 हबार कौन अच्छी कहले मते ना सम 11 होची 5,6 6,5 समडा 11 हबार समडा 12 हबार कौन अच्छी ना गोटे अच्छी 6,6 तो एति काउंट करिबा A3 मोड केते आउस देखि दियो तो A3 मोड केते आउसी ना A4 मोड काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 this is 15 okay now probability of E4 केते आउसी probability of E4 is equal to 15 by 36 3 रे काट दियो 3 5 जा 15 3 12 जा 36 तो 5 by 12 आंसर now question number D is completed now question number E what is question number E that is question number E that is E5 solution of E let E5 equal to event a multiple of 3 on first and multiple of 2 on second multiple of 2 on second multiple of 2 on second तो E5 लिखिबा बर्तन E5 टा फास्ट डाटा कोन अछि मल्टीपल ऑफ 3 तो मल्टीपल ऑफ 3 कोन कोन हे पारे मल्टीपल ऑफ 3 हे पारे 6 हे पारे दीटा मल्टीपल ऑफ 3 दिस इज मल्टीपल ऑफ 3 ना नहीं मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 2 कोन हे पारे मल्टीपल ऑफ 2 कोन हे पारे मल्टीपल ऑफ 2 होची 2 हे परियो 4 हे परियो 6 हे परियो आकु आमे पेयर करिबा फास्ट डायरेक्ट कोन कहछि मल्टीपल ऑफ 3 सेकेंड डायरेक्ट कोन अछि मल्टीपल ऑफ 2 तो E5 टा इवेंट हबो फास्ट 3 रहिबो सेकेंड रे 2 रहिबो फास्ट 3 रहिबो सेकेंड रे 4 रहिबो फास्ट 3 रहिबो सेकेंड रे व्हाट 6 रहिबो एटा हला फास्ट मल्टीपल ऑफ 3 देन एटा गोटे हेपलो तापर फास्ट 6 रहिबो सेकेंड रे 2 रहिबो फास्ट 6 रहिबो सेकेंड रे 4 रहिबो फास्ट रे 6 रहिबो सेकेंड रे 6 रहिबो केतना होच काउंट कर दियो 1 2 3 4 5 6 तो E5 mode is equal to 6 P of E5 is equal to cardinality of E5 divided by cardinality of S तो 6 by 36 that is equal to 1 by 6 1 by 6 clear मजा पड़ लगी then question number E completed now question number F
Now question number F is what? Question number F, a total at most solution of F, that is E6 is equal to a total at least at most 5, maximum 5 होगा दरकार। तो E6 टा कौन हला देखो E6 कौन लिख परिया मैक्सिमम 5 होगा दरकार, 5 टू कम हम मैक्सिमम 5 टोटाल हम। तो 5 कौन हो 1 4 4 1 हो 5 आगे नहीं, तापर 4 कौन हम 1 3 3 1 हो पार 4 टा आउ 2 2 हो पार 4 टा। 3 कौन हम ना 1 2 2 1 है 3 आउ एटा 5 एति 5 है एति 4 है एति वाट 3 है देन 2 2टा कौन कौन हो पार 1 कमा 1 हो पार 2। ओके तो देख दुटा डाई रोल कले मिनिमम नंबर के 2 ताठू कम हो पारे दुटा नंबर सेव कर मिनिमम नंबर कौन अच्छे डायरी 1 अच्छे नहीं 1 + 1 2 मिनिमम 2 हम मैक्सिमम आम कौन डाई जो थ्रो करी मैक्सिमम जो पचार 6 + 6 12 हो आमको क्वेश्चन देती मैक्सिमम 5 हो दरकार। मैक्सिमम 5 कि ना 1 + 4 कले 5 हो 4 + 1 कले 5 हो 5 टू कम किए 4 1 3 कले 4 हो 3 1 कले 4 हो 2 2 कले 4 हो 4 कथा सरला 3 कथा 1 2 3 हो 2 + 1 3 हो 3 सरला 1 1 के 2 है याडू आ कमी पार। तो ये E6 देख के कार्डिनलिटी ऑफ E6। तो कार्डिनलिटी ऑफ E6 के कार्डिनलिटी ऑफ E6 के कार्डिनलिटी ऑफ ना 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 3 8 हो। ओके तो कार्डिनलिटी ऑफ के E6 टा हो 8 कार्डिनलिटी ऑफ E6 है 8। देन what is the probability of P of E6? Probability of E6, that is what? The sum is what? Sum is 5, that is 1 4 4 1 and 3 2. A sum is 5 here. One sum is 5 also here. What this will be what? 5 1 4 4 1 and this will be what? Sum 5 and 1 pair left here, that is 1 4 4 1 this is 5 and what 2 3 3 2 हो जाउछ 5 हो जाउछ। तो 3 2 5 है आ समडा 5 हो गला तापर समडा 4 वाला कौन हो पारियो ना 1 3 3 1 आउ 2 2 हो पारियो तापर समडा 4 हो गला सम 3 वाला का कौन आसियो ना 1 2 आउ 2 1 आसी पारियो तापर केते समडा 1 2 वाला कौन आसियो 1 1 केतरा काउंट कर दियो बे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो। Now cardinality, that is cardinality of E6 is equal to what? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 by 36 sorry this is 10। तो probability of E6 के तो probability of E6 is equal to 10 by 36। आपको काट दियो 2 रे 5 by केते 18। तो F सरला। now last bit same number on the die both dice same number on the both dice pan कोन 1 1 रहबो 2 2 रहबो 3 3 रहबो केते रहबो 6 रहबो। तो G bit same number on both die same number on both die
G टा देखो G solution of G same number on both die, same number on both die. तो same number on both die के दोस्त देख दियो ना, that is E, this is event कौन ना भी E7 नहीं जी भी, तो E7 ना भी, तो E7 टा कौन आस परिवो ना सेम नंबर 1 1 हबार अच्छी, 2 2 हबार अच्छी, 3 3 हबार अच्छी, 4 4 हबार अच्छी, 5 5 हबार अच्छी, 6 6 कितना अच्छी 6 अच्छी. तो probability that is E7 mode is equal to what 6. Probability of E7 is equal to what 6 by 36, that is 1 by 6. 1 by 6. Clear? Then another question. Four cards are drawn at a time from a pack of 52 playing cards. Find the probability of getting all 4 cards are same suit. तो sample space केता हबो? Solution number of playing cards is equal to what 52. 4 cards are selected. 4 cards are selected out of 52. That is S mode, that implies S mode is equal to 52C4. Now A equal to event that all 4 cards are from same suit, same suits. चार्टा का सेम सुट. तो कौन पॉसिबिलिटी आसी पारे देखो, पॉसिबिलिटी आसी पारे 4 आर हार्ट्स है पारे, और कौन है पारे ना 4 आर डायमंड्स है पारे, और कौन है पारे, और 4 आर स्पेड्स है पारे, स्पेड है पारे, और 4 आर क्लब है पारे, क्लब माने हार्ट माने दैट इज एटा होची हार्ट कार्ड्स, डायमंड कार्ड होची एटा प्रीवियस क्लास कहथली, स्पेड कार्ड होची हमर एटा स्पेड कार्ड्स, क्लब कार्ड्स होची हमर एटा. तो एटा केतरा कार्ड अछि, हार्ट थिबा कार्ड केतरा कार्ड अछि 13 कार्ड अछि. तो ये है परिबो कार्डिनलिटी ऑफ ए, और माने एडिशन तो है परिबो 13C4 और माने प्लस 13C4 और माने प्लस 13C4 प्लस 13C4. तो कौन ही पड़ला ना 4 into 13C4. Clear? Now probability of A is equal to 4 into 13C4 divided by 52C4. This is answer. Now another question. What is the probability that 4 S's appear together? What is the probability that 4 S's appear together when a pack of 52 cards is shuffled completely? So 4 S's come together. Solution.
what is the probability that 4 S's appear together when a pack of 52 cards is well shuffled? So assume 52 cards are shuffled means number of arrangement what? 52, 50 card, that is 52 cards are shuffled. That implies S mod is equal to what? 52 factorial. एतिकी arrangement हो पारियो. से कौन कही ना A equal to event that 4S come together, occur together. A equal to event that 4 cards appear together. एटा आमर को मेथड ना स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करिया ना 4 जो ए अच्छी 4S अच्छी सातटा एका को गोटे काउंट करी तो टोटाल कार्ड के थिला ना 52 थिला -4 कलिटा सिंगल कर दी केते रहला 48 हैला 48 से तो एटा ऐड करबे केते ला कंसीडर 4S सिंगल तो 4A को सिंगल कले 48 हैला ए 4 एका को गोटे बंडल भीतर अछि तो 49 हैला तो 49 हबो आउ से मानक भीतर अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल तो दैट इज व्हाट कर्नलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कंसीडर दैट इज हियर कंसीडर 4S as single now number of things is what 48 plus 1 that is 49 so A mod is equal to what that is 49 A mod equal to what 49 factorial चारटा जो एक अच्छी एका अच्छी समान भीतर अरेंजमेंट 4 factorial now P of A is equal to what P of A is equal to 49 factorial into 4 factorial divide by 52 factorial so এটা calculate कले के था ना 49 factorial into 4 factorial divide by 49 factorial into 51 into 52 ये कैंसिल हला तो 4 factorial बने कहते 24 तो 24 divided by 51 into 52 calculate this okay calculate this now another question 8 persons stand in a line at random what is the probability that 2 persons X and Y do not stand together so first solution 8 persons are arranged in a row 8 factorial that is S mod is equal to 8 factorial A equal to event that X and Y stand together A equal to event that X and Y stand together okay A dash is the event X and Y do not stand together X and Y do not stand together first तो P of A टा बाहर करिवा that is P of A complement करते that is kernelity of A here kernelity of A X and Y stand together तो 8 जन अच्छा एक्स वाई मिसिक 8 जन अच्छा से दुटा गोटे कर दियो तो 8 माइनस केते 2 6 हैला से तक गोटे सिंगल माने एक्स एमती अच्छी 8 पर्सन अच्छी पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4 पर्सन 5 पर्सन 6 एंड एक्स एंड वाई अच्छी तो यहाँ को मुझे गोटे काउंट कली केते होची ना 1 2 3 4 5 6 7 होची तो ए मोड इक्वल टू 7 पर्सन
7 factorial xy भीतर इंटरचेंज into 2 factorial तो p of a टा केते होची p of a is equal to 7 factorial into 2 factorial by what 8 factorial तो एटा 7 factorial into 2 factorial माने 2 होची ये होची 7 factorial into 8 कैंसिल गले केते आसिला ना 1/4 हमको दरकार x and y do not stand together so p of a complement केते आसी p of a complement means 1 minus p of a तो 1 minus 1/4 तो केतला 3/4 आंसर 3/4 आंसर was 3/4 question a class consists of 25 boys a class consists of 25 boys and 15 girls a committee of 6 is to be chosen गोटे कमिटी 6 जन रहा दरकार चूज करा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर गर्ल्स तो फास्ट देखो 6 जन सिलेक्शन करा सॉल्यूशन फर्स्ट बिट तो एस मोड केते हबो ना हमें टोटल केते जन अछंती ना टोटल हला बॉयज केते अछंती बॉयज देछि 25 गर्ल्स देछंती गर्ल्स हला 15 तो टोटल केते होची टोटल दैट इज 40 तो 40 रो हमें चूज करिया पर 6 को कमिट number of members in the committee is equal to 6 so number of selection केता हबो ना 46 तो first bit what is the first bit all members of the committee are boys a equal to event that is e1 equal to event we can write e1 is equal to event all members माने all members are what all members of the committee are girl तो girl केतना अछि देखि दियो ना गर्ल अच्छी टोटल गर्ल अच्छी 15 तो e1 कर्नेल t is equal to 15 तेथरु कोन करबी सब 6 डाक गर्ल हेतु 15 c तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 कोन हो कहले मते तो कर्नेल t ऑफ e1 by कर्नेल t ऑफ s1 तो 15 c 6 by 40 c 6 तो bit 1 complete now bit 2 second number bit is what all members of the committee are boys same concept second bit e2 equal to event this solution of one bit complete now solution of second bit that is e2 equal to event second bit e2 equal to event all 6 are boys so e2 कर्नेल t boys केते अछि ना boys 25 अछि 25 c 6 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 केते हबो ना 25 6 c6 divided by 40 c6 this is solution number 2 okay now for solution number what 3 there are exactly 3 boys in the committee number 3 bit solution of 3 bit exactly 3 boys in the committee that is solution of 3 bit e3 equal to event there are exactly 3 boys there are what exactly 3 boys that implies if there are 3 boys and another is what 3 girls so e3 mode is equal to boy के तो अछंती 25% 25 3 जण हमको आउ 3 जण गर्ल दरकार गर्ल अछंती 15 तो 15 c 3
Now probability of E3 is equal to 25C3 into 15C3 divided by what? Divided by 40C3. Clear? So question number 3, bit number 3 is over. Now bit number 4. There are exactly 4 girls in the committee. 4 जन girls रहे दरकार हले 2 जन boy रहबो. तो E4 now bit number 4. What? E4 equal to event. There are what? E4 is equal to event. There are exactly what? Exactly 4 girls. 4 girls हेले आउ केते 6 जन दरकार नै आउ 2 अछि हमर बॉय हबो. तो E4 मोड इक्वल टू गर्ल 4 जन सिलेक्शन हबो केते रो 15 रो 15C4 आ बॉय केते हबार अछि 2टा. तो 25C2 टोटल 6 हेबा दरकार. मते जदि एक्जाक्टली 4 गर्ल्स कमिट पे दरकार हो तो बाकी 2टा बॉय दरकार हो. 2टा बॉय कोन आउट ऑफ व्हाट 25 कर सिलेक्शन हबो. तो P of E4 केते हे परियो P of E4 ता ना 15C4 into 25C2 divided by 40C what 40C6. ये हला क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Then question number of solution of question, at least one girl in the committee. Minimum what a girl रहबो. This is very important. Minimum number of girl is what 1. Now solution of fifth bit. Now solution of fifth bit. Solution of fifth bit. Fifth bit. E5 equal to event. E5 equal to event. There is at least one girl. तो टोटल 6 जन दरकार. एडी गर्ल कली एडी बॉय कली. गर्ल टोटल केते अछि 25 अछि. सॉरी गर्ल केते अछि टोटल 15 अछि. बॉय टोटल अछि 25 अछि. तो मिनिमम गर्ल गोटे दरकार कमिट पे. तो गोटे गर्ल हेले बॉयज केते हबो 5. 2टा गर्ल हेले बॉयज सब केते 4. 3टा गर्ल हेले बॉयज केते हबो. और आमे कॉम्प्लीमेंट माने करदवा 1 माइनस नो गर्ल गले भी हबो. 2टा मेथड करबा एटा 2टा मेथड करियो आंसर सेम देखिबा हला. तो एटा करि पर इजी रे देखो एमिन कले केस बढ़ी जिवो. कोन कहै देयर इज एट लीस्ट वन गर्ल इन द कमिटी. मु कहि परबी देयर इज नो गर्ल इन द कमिटी 1 माइनस इजी कहि पे देखो इवेंट एट लीस्ट वन गर्ल. तो E5 डैश ता कोन हबो नो गर्ल इन द कमिटी. एटा कले इजी हे जु इन द कमिटी. तो नो गर्ल थिबा कमिटी ना 6 हबो हेबो. दैट इज ऑल आर दैट इज व्हाट नो गर्ल इन द कमिटी माने कोन बोलछो दैट इज ऑल 6 आर बॉयज. तो ऑल 6 आर बॉयज. तो P of E5 केते आसियो ना P of दैट इज व्हाट E डैश 5 रो मोडटा केते आसी परु गोटे अछि सब जगह माने केते आसी परु. दैट इज ऑल 6 आर बॉयज. बॉयज केते अछंती 25. तो 25 6 केते 25 C6 हला. तो P of केते होची ना P of A complement is equal to 25 6 C6. हमको दरकार कोन इवेंट एट लीस्ट वन गर्ल. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन गर्ल. एट लीस्ट वन गर्ल. तो एट लीस्ट वन गर्ल लिखिबा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E is equal to probability of what probability of 1 minus probability of E complement. So 1 minus probability of E complement what that is. So this is 25 sorry this is 25 C6 divided by what 40 C6. This is what 25 C6 divided by 40 C6. Now P of E is equal to what P of E that is P of E is equal to 1 minus P of E complement.
तो 1 माइनस पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट 25C6 डिवाइड बाई 40C6. This is final answer and calculate this. Now homework for you, the elements book exercise, the problems of exercise of element book homework for you. Thank you. Have a nice day.